Hello students, now this is our continuation of lecture peritoneum, sixth part. So in this lecture we will discuss the subdivisions of cavity of peritoneum. That means we have discussed that peritoneum की दो layers होती हैं, parietal layer and the basilar layer. In between these two layers we have the cavity. Basilar layer is adhere to the organ. Parietal layer is between the layer that is anterior wall and the organ. So we will discuss the cavity present between the organs and the layer. So these are two cavities, greater sac and lesser sac. नाम ही बता रहा है greater बड़ी cavity, lesser small cavity. So this whole thing is greater sac. So the greater sac, in greater sac you will study जैसे हम anterior abdominal wall की dissection करते हैं तो greater sac में हमारे पास क्या है, liver, stomach, large intestine, files of small intestine, gallbladder, these all are the structure of greater sac. Lesser sac is also known as omental, bursa or bursa. So this sac, this pink color sac is lesser sac. This one is the lesser sac and rest all is the greater sac. Okay. First of all we will discuss the lesser sac. So this thing is the lesser sac. We have discussed that this thing is the lesser sac. So lesser sac is present behind liver and stomach. That means अगर मैं stomach और liver को dissect कर दूं, इनको resect कर दूं, इनको body से निकाल दूं, then I can reach to the lesser sac. This lesser sac has only one communication with greater sac, that is the foramen or epiploica. Lesser sac has boundaries, so you can imagine the boundaries. These are the boundaries. So anterior, this is anterior side of the body, this is posterior side. It's actually बच्चों sagittal section है. So anterior side, posterior side, anterior, posterior. Anterior wall is formed by the liver. Liver ये liver का part है. नीचे वाला ये lobe कौन सा होता है? This is caudate lobe. So anterior boundary is formed by the caudate lobe of the liver. Then this thing we have discussed, this is lesser omentum. Then stomach, the posterior surface of stomach, then anterior first and second layer of greater omentum. These structures will form the anterior wall. So this is the anterior boundary of the lesser sac. Posterior boundary is formed by the third layer of greater omentum. Then structures which are present behind the or below the stomach, these are also known as the structures of stomach bed except spleen. इसमें आपके पास क्या है? We have transverse colon, transverse mesocolon, then we have the pancreas and the upper part of left kidney and suprarenal gland, left suprarenal gland. So these are the boundaries of our lesser sac. So lesser sac के आगे क्या है बच्चों? Liver and stomach and greater omentum. इसके behind posterior abdominal wall जहाँ पे हमारे पास retroperitoneal organs है, suprarenal gland left side है obviously, suprarenal gland, kidney, pancreas and the transverse colon. These are the boundaries of the lesser sac. Now lesser sac has right and left borders. So right border of lesser sac is formed by, यहाँ से हम देखते हैं, this thing is the stomach, lesser curvature, greater curvature.
जिसमें बच्चों टिप ऑफ द फिंगर है दैट इज द लेसर सैक, दिस वन इज लिवर। तभी हमने बोला ना कि लिवर, actually liver is like this is cut section of liver, we have shown you the cut section of liver. So liver is forming anterior and stomach is also forming the anterior boundary. अब हम स्टमक और लिवर को उठा देंगे तो अंदर लेसर सैक है, तो बाकी सारी पोस्टीरियर बाउंड्री। अब अगर मैं दोबारा इसी की बात करूं राइट और लेफ्ट, तो दिस साइड इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू है। सो राइट साइड पे यू कैन सी द राइट साइड we have reflected peritoneum from diaphragm, that is the same quadrate lobe of the liver. Then floor of foramen epiploica, ये वाला बच्चों foramen epiploica है जिसके through finger अंदर डाली है। Then the first part of duodenum, here will the first part of duodenum, and related to that part is the head of pancreas. Then the greater omentum, this is the greater omentum, second and third layer of the greater omentum, they form the right borders. The left border is formed by same, अब लेफ्ट साइड पे लेफ्ट बॉर्डर इज फॉर्म्ड बाय द गैस्ट्रोफ्रेनिक। अगर बच्चों मैं स्टमक को उठा दूं तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होता है, अदरवाइज फ्रॉम स्टमक टू द डायफ्राम गैस्ट्रोफेरेनिक ligament, then gastrosplenic ligament between stomach and spleen, and rhino-renal ligament, then the left margin of lower part of the greater omentum. So these are the left border, here is the right border, anterior boundaries, these are the boundaries of lesser sac. Now what is foramen epiploica, also known as foramen of Winslow? 2 marks में क्वेश्चन आता है। सो हमने बोला है देयर इज ओनली वन कम्युनिकेशन बिटवीन द लेसर सैक एंड द ग्रेटर सैक। पहले ही हम बोल चुके हैं स्टमक और लिवर के पीछे लेसर सैक है, आगे ग्रेटर सैक है। सो दिस इज द ओनली वन ओपनिंग slit like vertical slit like structure which is present communication between the lesser and greater sac. It is at the level of T12. This is question, this is at the level of T12. Actually as per some books, agar this is greater sac and this is lesser sac, so lesser sac, greater sac, lesser sac is a diverticulum of the greater sac. अगर lesser sac diverticulum है, there is one communication, this communication is known as foramen of Winslow or foramen of epiploica. इसकी बाउंड्रीज कर लेते हैं, इट इज क्वाइट इजी, ये वाले फोरामेन की बाउंड्रीज करने लगे हम। वी हैव एंटीरियरली वही सेम चीज, राइट फ्री बॉर्डर ऑफ द लेसर ओमेंटम, anteriorly we have the right free border of lesser omentum, which is this yellowish thing is lesser omentum. posterior relations are very important. इस फोरामेन के पीछे रिलेशन, these are inferior vena cava, राइट साइड को है, लेसर सैक अगर मैं ड्रा करूं बच्चों इस एरिया में है टुवर्ड लेफ्ट साइड को, तो फोरामेन टुवर्ड राइट साइड को, like this we have the opening. So foramen राइट साइड को है तो इसकी साइड पे हमारे पास आएगी राइट सुप्रारेनल ग्लैंड एंड T12. These are very important. इस फोरामेन के पीछे पोस्टीरियर रिलेशन में क्या है, पोस्टीरियर बाउंड्री क्या है, इंफीरियर वेना कावा, राइट सुप्रारेनल ग्लैंड एंड T12. Then superiorly वही सेम, liver, quadrate lobe of liver, and inferiorly we have the first part of duodenum and horizontal part of the hepatic artery. Now greater sac, this thing is the greater sac. Greater sac has liver, stomach, spleen, superior part of duodenum, and this transverse colon
will divide greater sac into two part, supracolic पहले भी हम कर चुके हैं, and infracolic part. So supracolic like above the colon, ट्रांसफर कॉलन से ऊपर सुप्रा, नीचे इंफ्रा. तो सुप्रा में हमें क्या मिलेगा, कौन कौन से ऑर्गन मिलेंगे, पैंक्रियास, ड्यूडेनम, किडनी, सुप्रारेनल ग्लैंड्स, लीवर एंड स्टमक. एंड इंफ्राकोलिक में हमें क्या क्या मिलेगा बच्चों, कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन एक्सेट्रा. सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्राकोलिक, इसकी स्पेसीज, ये वाली वीडियो हमारी स्पेसीज की है, तो सुप्राकोलिक की जो स्पेसीज होती है इनके नेम्स में ही सारा क्लियर हो जाता है. वी हैव टू टाइप ऑफ द स्पेसीज इन दिस रीजन. सुप्राकोलिक पार्ट में दो तरह की स्पेसीज होती हैं, इंट्रापेरिटोनियल स्पेसीज एंड एक्स्ट्रा. इंट्रापेरिटोनियल स्पेसीज लेफ्ट एंटीरियर लाइक दिस, हियर लेफ्ट एंटीरियर स्पेस, लेफ्ट पोस्टीरियर स्पेस, इसके पीछे क्या था, इसके पीछे था हमारे पास लेसर सैक. सो लेसर सैक, देन राइट एंटीरियर स्पेस, राइट पोस्टीरियर स्पेस. ये हम करेंगे डेप्थ में. इट इज हिपैटोरिनल पाउच और मॉरिसन्स पाउच. देन एक्स्ट्रापेरिटोनियल सेम है. एक्स्ट्रापेरिटोनियल में राइट एक्स्ट्रापेरिटोनियल स्पेस, लेफ्ट एक्स्ट्रापेरिटोनियल स्पेस, मिडल एक्स्ट्रापेरिटोनियल स्पेस और बेयर एरिया ऑफ लीवर. बेयर एरिया ऑफ एनी ऑर्गन बच्चों वो एरिया जहां पर पेरिटोनियम कवरिंग नहीं है, दैट इज बेयर एरिया, द एरिया विच लैक्स ऑफ पेरिटोनियम. जहां पर पेरिटोनियम नहीं होती है उस एरिया को हम बोलते हैं बेयर एरिया ऑफ दैट ऑर्गन. सो हिपैटोरिनल पाउच, नाम बता रहा है हिपैटोरिनल. हेपर इज liver, renal is kidney. So we know liver is more toward right side. So this is liver and this is the space of kidney. So this hepatorenal pouch is potential space in our abdomen on right side between liver and किडनी. लीवर एंड किडनी के बीच में एक पोटेंशियल स्पेस है, दैट इज नोन एज द हिपैटोरिनल पाउच. इसकी बाउंड्रीज एंटीरियरली बच्चों ये 2D है, अदरवाइज स्पेस तो अंदर है 3D ऐसे है स्पेस. तो कुछ पार्ट ऑफ द लोब ऑफ लीवर इज एंटीरियर एंड हियर वी हैव द गॉल ब्लैडर, सिस्टिक फोसा. सो anteriorly we have the inferior surface of right lobe of liver, gallbladder. posteriorly इसके पीछे right side है तो right suprarenal gland, upper part or upper pole of the left kidney, second part of duodenum. Here we have first part, this is the second part of the duodenum. hepatic flexor. What is hepatic flexor? Hepatic flexor is, so यहाँ से देखो अच्छा, this is ascending colon, this one is transverse colon, then descending colon. तो ये जो टर्न है this is flexor, it is near heper, so this is hepatic flexor. Here is splenic flexor. Then transverse mesocolon, head of pancreas, these are related to the hepatorenal pouch. Superiorly this thing, it has the inferior coronary ligament. What is coronary ligament? ये आप लास्ट वीडियो में देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में बताया है. inferiorly this is defected. Hepatorenal pouch is defected inferiorly. It is communicating with the peritoneal cavity. This is question. So applied anatomy. This thing, this is heper, here is kidney. So this area is the area of hepatorenal pouch. So this is the most dependent area in supine position. So in our body, most dependent area in supine position is the hepatorenal pouch. That means if there is any pus or any hemorrhage or any fluid
accumulated in abdomen, it can collect in this pouch. So hepatorenal pouch मोस्ट डिपेंडेंट एरिया होता है, और हम अगर यहाँ पे पस होती है तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम इस पस को ड्रेन कर सकते हैं. देन अगर गैस्टर अल्सर की परफोरेशन हो जाए, दिस इज गैस्टर, स्टमक के अल्सर की अगर परफोरेशन होगी पोस्टीरियर साइड की, तो फ्लूइड कहाँ जाएगा? इसकी पोस्टीरियर वॉल की परफोरेशन हुई, अब फ्लूइड कहाँ जाएगा? दैट्स करेक्ट. दिस फ्लूइड विल एक्युमुलेट इन दी लेसर सैक. क्यों? इसके पीछे लेसर सैक था. अब लेसर सैक से, लेसर सैक की एक ओपनिंग होती है, वी नो, फोरामेन ऑफ विंसलो. लेसर सैक से ये फ्लूइड कैन ट्रिकल डाउन टू दी हिपेटोरिनल पाउच, सेम पाउच. सो लेसर सैक से हिपेटोरिनल पाउच में भी ये ट्रिकल हो सकता है. और पस है लेटर ऑन ये क्या करेगी? ये दिस पाउच जो ओपनिंग थी फोरामेन ऑफ विंसलो को एडहेयर कर देगी, इसको क्लोज कर देगी. दैट मीन्स नाउ पस और द फ्लूइड इज प्रेजेंट इन लेसर सैक. सो क्लिनिकली अब हम इसको कैसे रिमूव करते हैं? हम फोरामेन ऑफ विंसलो से रिमूव नहीं करते. इट इज इंपॉर्टेंट. क्यों नहीं करते? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था इसके फ्री मार्जिन में स्ट्रक्चर्स होते हैं. फोरामेन ऑफ विंसलो के फ्री मार्जिन में स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमने वीडियो में लास्ट में करे हैं. दोज आर दवा डक्ट, दैट इज वाइल डक्ट, देन पोर्टल वेन, hepatic artery. These are structure related to this foramen. So if we try to pass something through this foramen to drain the pus from the lesser sac, we might rupture these structure. हम इनको रप्चर कर सकते हैं, तो हम इनके थ्रू ड्रेन नहीं करते. देन इंफ्राकोलिक पार्ट, इससे नीचे वाला पार्ट, दिस इज डिवाइडेड बाय रूट ऑफ मेसेंट्री. व्हाट इज रूट्स ऑफ मेसेंट्री? लास्ट वीडियो में हमने कर लिया है. रूट ऑफ मेसेंट्री डिवाइड दिस इंफ्राकोलिक पार्ट इनटू टू पार्ट्स, राइट इंफ्राकोलिक and left infracolic. So we have right infracolic part and we have left infracolic part. Now the left and right infracolic parts. Left infracolic part is quadrangular. You can see this is quadrangular in shape and it is bounded. Right side of बच्चों, right side it has mesentery and left side descending colon, and it is open with pelvic. The right side was triangular and its right boundary was formed by ascending colon, upper was formed by transverse colon, left boundary by the mesentery. Now पैराकोलिक गटर, नाम ही बता रहे हैं पैराकोलिक. दैट मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन इज नोन एज कॉलन. सो लार्ज इंटेस्टाइन के पैरा के साइड्स में जो एरिया गटर लाइक स्पेसिस होंगी, दोज आर नोन एज द पैराकोलिक गटर. सो राइट पैराकोलिक गटर एंड लेफ्ट पैराकोलिक गटर. सो द स्पेस बिटवीन असेंडिंग कॉलन एंड द पेरिटोनियम is known as right paracolic gutter, and this right paracolic gutter will communicate with Morrison pouch or hepatorenal pouch. हमने बोला था hepatorenal pouch is defected inferiorly. So this was the area of hepatorenal pouch. It is open in right paracolic gutter. Left paracolic gutter is bounded between the descending colon and our peritoneum. This one is important. Here left paracolic gutter is bounded by pherenocolic ligament. Pherenocolic
paracolic. That means feren is diaphragm. This is a ligament from diaphragm to the splenic flexor. So बच्चों इस लिगामेंट का फायदा है, इसका बेनिफिट है हमें कि if there is any pus or any fluid accumulated in left paracolic gutter, because of this ligament, this pus cannot trickle upward. So this ligament, the pherenocolic ligament, will limit the infection in only paracolic gutter. This is clinical use of pherenocolic ligament. Below this is open in pelvic cavity. So next space is the recto-uterine pouch or Douglas space. Recto-uterine नाम से बता रही between rectum and uterus. So this is anterior side, this is posterior side. It is a cut section of female pelvic. So this is the uterus, this one is rectum. So in between uterus and rectum we have space, potential space, that is known as the Douglas pouch. It is most dependent pouch or space in upright position. अगर पेशेंट खड़ा है तो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन यहाँ पे ड्रेन होती है, ट्रिकल डाउन हो जाती है इस एरिया में बच्चों, विच वी कैन ड्रेन. नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा. अदरवाइज इस स्लाइड में अगर आप देखना चाहो तो दिस इज द वेजाइना. सो इफ देयर इज इन्फेक्शन इन दिस एरिया वी कैन ड्रेन दिस इन्फेक्शन थ्रू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ वेजाइना. नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये क्लियर हो जाएगा. So boundaries of this pouch, anteriorly quite easy. Anteriorly we have the uterus, posterior surface of uterus and posterior fornix of vagina. Posteriorly we have rectum, नाम बता रहा है. Inferiorly recto-vaginal fold. Clinical significance of the recto-uterine pouch. So this is recto-uterine pouch, this one is recto-uterine pouch. Hepatorenal pouch is also opened in cavity. So infection or blood from hepatorenal pouch can trickle to jugular pouch in supine position. In vertical position, the pouch, this recto-uterine pouch, is most dependent area for pus, and this can be drained through the vagina, posterior wall of the vagina. Colpotomy, जब वर्ड कोल्पो वर्ड पढ़ते हुए दिस इज रिलेटेड विद द वेजाइना. सो हम इस इन्फेक्शन को थ्रू वेजाइना, पोस्टीरियर वॉल ऑफ वेजाइना, वी कैन ड्रेन. थैंक यू.